the book Living with the Himalayan Masters, Swami Rama. He looks so handsome at this age, man. That's awesome, man. Anyways, let's start. Introduction by Pandit Rajmani Trigunath. At Thy Lotus Feet, Sri Swami Rama. Then the first is special education in the Himalayas. Second is the master teaches. See, learning how to give, how a master tests, all night journey through the forest. So all these things are different aspects of the teachings. The path of the direct experience. Wow. Learning humility, conquering fear, the path of renunciation. Wow, that's so cool, man. Should I get married is a temptation? That's amazing. Next is experiences on various paths. So these are the kind of jewels we are looking for, actually. These are the kind of jewels, experiences of their, beyond the great religions. Jesus in the Himalayas, my meeting with a Jesuit sadhu, a Christian sage of the Himalayas, vision of Christ, Judaism and yoga. Wow. Divine protection. हमसा, by the way, आपको पता होना चाहिए, जिसको हम क्रिश्चियन थियोसॉफी में बोलते हैं थर्ड इनिशिएट इज हमसा. उसके फोर्थ इनिशिएट को बोलते हैं परमहंसा, राइट? हमसा, द लैंड ऑफ हमसास, पावर ऑफ द माइंड. So this is exactly where he did, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो किए थे माइंड के ऊपर, वो इसके साथ किए थे. ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मैटर, ये वो, ऑल द फैंसी स्टफ. हीलिंग पावर, ग्रेस ऑफ द मास्टर, mastery over life and death, journey to the West. Wow. All right, let's start the session now. Introduction by Pandit Rajmani Trigunath. एक्चुअली में ये हिंदी बुक स्टडी है, पर उसका टेक्स्ट क्योंकि इंग्लिश में है, तो हम इंग्लिश में पढ़ के वी विल टॉक अबाउट इट इन हिंदी. ओके. Sri Swami Rama took me under his wing in 1976, and from that time on, every minute of the 20 years I lived with him was a time of learning. Now that he is no longer in his physical body, I look back and realize how skillfully he filled my every breath with the living presence of the masters who were such an integral part of his own life. In continuous waves, he nourished my mind and heart with the perennial knowledge and love of the lineage of the sages. Today, with awe and gratitude, I ask myself, after having him as my master, is there anything yet to be achieved? One of the most blessed and richest periods of my life was in 1985, when Swamiji's behests, when at Swamiji's behests, I began to translate Living with the Himalayan Masters into Hindi, my native language. Every evening, I showed him that day's translation, Swamiji told me the untold part of the story, which means behind every actual story that was visible, there is also an untold part of the story, which he would then tell, okay, but this is what actually happened. These were the more details in it, So, wow, that's fancy. Untold part of the story. And I soon realized he was using the translation as an excuse for me to glimpse the inner life of the sages he had written about and to absorb their teachings. Every episode brought a revelation which I was able to assimilate only through the grace of Sri Swamiji and the masters who speak through the book. Living with the Himalayan Masters is the embodiment of Swamiji's life, his spiritual journey, and his experiences with the masters of different traditions. He addresses the issues that all of us confront at least once in our lifetime and shares his experiences in such a simple and loving manner
that they become a part of us. क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम इस तरीके के पाथ में चलते हैं कि हमें अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग लोग या अलग अलग मास्टर्स जो हैं वो हमारी लाइफ में आते हैं। उसका कभी कभी एक पर्पस, प्राइमरी पर्पस कभी कभी ये होता है कि हमको ये दिखाना या हमको ये बतलाना कि हर रिलीजन की टीचिंग जो होती है वो सेम होती है, फंडामेंटल टीचिंग सेम होती है। और जितना आप ये समझने लग जाओगे, आपका जो अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है, यानी कि आपका अग्नि चक्र जो है वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देगा जितना आप ये समझना शुरू कर दोगे। राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमको पता है कि अलग अलग हमको नहीं पता, मैं आपको अभी अभी मतलब बताता हूँ, ठीक है। हमको पता है कि 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रास। मास्टर जो हमारे जो स्पिरिचुअलिटी से उन्होंने बताया कि 11 चक्रास होते हैं, हमको वो भी मतलब अब पता है। जो नहीं पता प्रॉपरली वो ये है कि कुछ हेड के ऊपर कुछ इस तरह के माइनर चक्र होते हैं जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बाद जाके खुल, आई एम सो सॉरी, उसके बाद जाके वो खुलते हैं। कुछ ऐसे चक्र होते हैं हेड के ऊपर जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बाद जाके उनका पता भी उसके बाद ही चलता है एक्चुअली। मेरे जहाँ तक ख्याल है वो पेरिफेरी में मार्क्ड है ऐसे, ऐसे करके 6 या 7 है, 6 या 7 है पेरिफेरी में मार्क्ड है। आपने जो राजा महाराजाओं का जो क्राउन देखा है, क्राउन, वो उसका सिंबल है एक्चुअली। सिर्फ क्राउन चक्र का नहीं है, इसका सिंबल है इन सब के, क्राउन एंड ये इन सब का एक साथ कलेक्टिव सिंबल है एक्चुअली। समझ में आई बात? सो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो नहीं पता होती हैं एक्चुअली लाइफ में, बट यू स्टार्ट टू सी देम ऑन एंड ऑफ। जब आपकी अपनी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रही होती है, मैं दूसरों से क्या सुना होता है, एंड एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एक टाइम के बाद। ये पिक्चर कहीं भी शेयर्ड नहीं है, ये आई थिंक मैंने कहीं पे एक बहुत पहले कभी देखी थी कि वो तब की याद है, बट आई डोंट थिंक ये पिक्चर कहीं पे है एक्चुअली। एनीवेज, लेट्स गो एंड at the mundane level, this book shows us who we are and what steps we must take to be happy and successful. It inspires us to work hard and have faith in our own effort. At the spiritual level, it introduces us to our own mystical and esoteric self as we encounter the adepts hidden in the caves and the monasteries of the Himalayas and other remote parts of India, Tibet, Nepal, Sikkim, and Bhutan. That reminds me, हम इंडिया में रहते हैं, नेक्स्ट ईयर नेपाल रिट्रीट एंड भूटान बैसाख भी जा रहे हैं। यस। एनीवेज, नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल, दिस ईयर। Spiritual books, especially those of an autobiographical nature, often give the impression that the experiences and spiritual achievements of the masters are beyond our reach. Swamiji, however, puts miracles and mysticism in an entirely different light. Reading it, we feel that he is one of us. He is a young boy full of mischief. He is a teenager full of curiosity and adventurous zeal. He is a seeker with certain strengths and weaknesses, just like us. He sometimes fails to distinguish the fakes from genuine masters, mistaking magic for spiritual achievement. At one time, for example, attracted by the magical power and glamorous life of sorcerers and low-grade tantrics, he even considers abandoning his master for another teacher. His human traits are so familiar to us that in reading about them, his journey becomes our journey. आपको ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो मास्टर्स होते हैं वो दे आर नॉट ऑल बॉर्न परफेक्ट, सबको सब कुछ नहीं मालूम होता है। इनफैक्ट स्वामी रामा इज अ ग्रेट 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 मास्टर। सो उनकी लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट हमारी लाइफ की तरह ही है, उन्होंने भी उतनी गलतियां की जितनी कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में कर रहे हैं। बट उनके पास एक इनेट विजडम होता है जो कि उन्होंने सालों सालों की मतलब इनकारनेशन की अर्निंग होती है, उससे एक गलती करने के बाद वो सीख जाते हैं।
वन मिस्टेक एंड दे लर्न। पर अपन जो है वो मिस्टेक 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 एंड नो लर्निंग। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ मास्टर एंड मोर लाइक पीपल लाइक अस, की गलती पे गलती किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। सो बिग बिग डिफरेंस एक्चुअली। सो या, लेट्स गो ahead. Stories in this book infuse our hearts with overwhelming gratitude for the sages who selflessly share their boundless love and yet remain unrecognized by multitude. Swamiji is one of them. While he lived among us, he lectured, wrote books, and established large charitable organizations. But very few of us perceived his spiritual stature. In the last phase of his life, those who were near to him and had eyes to see came to know that Swamiji was master of every esoteric practice he mentions in his book. But they never knew how and when he practiced them. Hmm. Swamiji discouraged a belief in miracles, yet every moment of his life was filled with miracles. No one who came near him ever went away empty handed. His gifts were of different shapes, sizes, and weights. Upon touching his feet, a businessman might be blessed with prosperity, a sick man with health, and a student with knowledge. Some understood what they had received, others did not. Now I look back and wonder how beautifully he unveiled the spiritual mysteries while skillfully hiding his identity as one of the great sages from the Himalayan peaks. मतलब कभी भी किसी ग्रेट गुरु के पास कोई भी आता है तो उसको अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्या बोलते हैं, if somebody comes and asks about कि गुरुजी bless me with a child, bless me with a business का upgradation, or bless me with knowledge on this subject or that subject, they're given exactly what they need. But I remember हमारे स्पिरिचुअल टीचर जो है मास्टर शो, जब वो अलग अलग हीलिंग या पब्लिक दर्शन में जब जाया करते थे, उस टाइम पे वो 5,000 लोग अगर आए होंगे वहां पे, तो मास्टर चौहान जो है बोलेंगे ठीक है, आप यू कैन, आई विल डू अ हीलिंग फॉर एवरीवन नाउ। आप अपने आप को या अपने फैमिली मेंबर्स को इमेजिन कर लो, आई विल हील देम ऑल। तो लोग क्या करते थे, वहां पे अपने फैमिली मेंबर्स की फोटोग्राफ लेके आते थे, या मतलब ही वुड दे वुड इंटेंट कि हमारे फैमिली मेंबर की हीलिंग हो जाए, या उनके कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम की हीलिंग हो जाए, जैसे कि कैंसर हो गया, पैंक्रेटिक कैंसर हो गया, ये वो जो कुछ भी हो गया, ठीक है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, स्मॉल या बिग। तो मास्टर जो सोई जो है ब्लेसिंग करते रहे 5-7 मिनट के लिए, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन was a grave serious problem or a simple problem or a financial problem, किसी भी तरह की प्रॉब्लम would actually get healed, literally get healed. सो हमारे लिए जो जो चीजें मिरेकल्स हैं, उनके लिए वो चीजें लॉज हैं एक्चुअली। वो उन लॉज से काम करते हैं जो लॉज हमको नहीं पता है, अननोन लॉज हैं हमारे लिए, राइट। सो इसीलिए स्वामी रामा ये बोल रहे हैं कि डोंट बिलीव इन मिरेकल्स। हमको जो चीजें मिरेकल लगती हैं वो उनके लिए आमतौर पर साधारण चीजें हैं कि उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से परफॉर्म की जा सकती है एक्चुअली। अगर आपकी कॉन्शियसनेस फॉर एग्जाम्पल एक बुद्धिक लेवल तक पहुंच जाए, बुद्धिक लेवल जो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस और इंग्लिश में बोलते हैं क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, अगर आपका कॉन्शियस वहां तक पहुंच जाए तो आप जिस तरह के मिरेकल्स कर सकोगे उस लेवल से, वो साधारण आदमी के लिए इम्पॉसिबल हो गया एक्चुअली। हाउ, राइट। अगर आपकी कॉन्शियसनेस एक लेवल और ऊपर पहुंच जाए, जिसको बोलते हैं निर्वाणा, और या निर्वाणिक कॉन्शियसनेस, या फिर आत्मिक कॉन्शियसनेस बोलते हैं थियोसॉफिकल लिटरेचर के हिसाब से, वहां पे जाके आपको जिसको हिंदी में बोलते हैं सत्य का ज्ञान होगा, यू विल नो द ट्रूथ, absolute truth is known over there, something like that, right? So अलग 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 लेवल ऑफ कॉन्शियस में आपको अलग अलग सिद्धियां मिलेंगी, अलग अलग तरह के काम करने के लिए। पर उस टाइम पे आपके लिए वो बिल्कुल नॉर्मल चीज होगी। उस टाइम पे आपको लगेगा कि अरे भैया अंधविश्वास में बिलीव मत करो, डोंट बिलीव इन मिरेकल्स, इट इज जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हायर द कॉन्शियसनेस, मोर द एबिलिटी, मोर द पावर ना। यू ऑल नो, आप सबको पता हो कि लॉर्ड बुद्धा ने अपनी लाइफ में एक भी मिरेकल नहीं किया, नॉट इवन वन मिरेकल इन हिज एंटायर लाइफ इज रिकॉर्डेड। आपको ये भी पता हो कि लॉर्ड बुद्धा इज द मोस्ट सीनियर
The most senior, everyone. कोई तो बात होगी. The most senior, no miracles. आगे चलते हैं. Swami Rama was fully established in his own self nature, a playful child, a carefree adolescent, a gentle sage, a tactful adult, spontaneously manifested in him. For him, past and future did not exist. He always lived in the present, and the circumstance of the moment called forth whatever persona would help and guide those who were with him. Transformative energy emanated from him if he stayed for a time in a rocky, barren land. A beautiful rock garden would emerge. If he stopped to speak to a woman suffering from chronic depression, her face would light up and ears would drop away. Wow. To Swamiji, nothing was useless. Everything had purpose and meaning. He once put rocks and pebbles around an odd looking septic vent pipe and artfully placed a few stumps around it. The resulting sculpture looked like a holy man sitting in meditation, and visitors kept a respectful distance. Septic vent pipe. That's nice. He was very fond of cactus. He had a huge collection in India and a smaller one in the States, United States. One day I asked him, Swamiji, why do you love cactus so much? He said, I'm in the habit of tending those who are full of thorns and discarded by everybody. It gives me great joy when I see them blossom. See, of course, he is poetically, मतलब वो poetically ये बता रहे हैं कि कैक्टस जो होते हैं वो इट्स लाइक मैं ऐसे लोगों को अपनी शरण में लेता हूँ जो कि बाकी लोगों मतलब बाकी लोग उनको नहीं देखते या जिनकी ऑरा जो है वो इस तरह की है नीडल्स टाइप की ऑरा है राइट आई टेक केयर ऑफ दोज पीपल बट इवेंचुअली इफ यू सी there are many, I mean, he is a great master, right? So a cactus can be programmed to do something, right? आपको पता है कि cactus प्रोग्राम किया जा सकता है कुछ एक सर्टेन तरह का काम उससे किया जा सके इसके लिए, राइट? अगर इस तरह के लोग आपके पास बार बार आते हैं जिनकी की ऑरा बहुत ही डर्टी है, बहुत ही कंटामिनेटेड ऑरा है, या बहुत ही मतलब फियर, गिल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी वाली अगर ऑरा है, तो अपने कैक्टस को प्रोग्राम कर सकते हो कि वो इस ऑरा को क्लीन कर दे पूरी तरह से आपके पास आने के पहले. मेक्स लॉजिकल सेंस. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक लॉन्ग पाथवे है जहाँ पे कैक्टस लगे हुए हैं और सारे के सारे कैक्टस जो है वो प्रोग्राम्ड हैं और आपके पास रोज 400 लोग आते हैं, इट विल बी स्मार्ट कि आप कैक्टस को इस तरीके से प्रोग्राम कर दो कि वो पूरी की पूरी ऑरा को कंप्लीटली क्लीन कर दे आपके पास आने के पहले, बिफोर दे कम टू यू. क्लीन मेक्स a lot of sense actually. Think about it. And a holy master or a great master like Swami Rama will have a reason for liking something, not for show of purpose कि oh I take care of these people. No, not like that. कोई बड़ा वजह होगा ना उसके पीछे, कोई स्मार्ट वजह होगी एक्चुअली. इट मेक्स लॉजिकल सेंस एक्चुअली. आगे चलते हैं. I remember my own life. Before 1976, I was like a speck of dust drifting along the roadside. Then one day, Swamiji picked me up and transformed me into a living pollen. With his loving touch, I became an integral part of that garden which the sages cultivate. Today, I have been given the honor and privilege of writing an introduction to this classic work. But I hope you will understand that my attempt to do so is like a flower's attempt to describe the gardener and his work which far exceeds the flower's understanding. What I received directly from Swamiji and what I learned about him by visiting places where he did his sadhana, however, gives me the confidence to say that the stories in this book represent only the tip of the iceberg. Wow. Living with the Himalayan masters has its own spirit,
I have read and pondered over it countless times, and each time I have found something new, something that was just what I needed at that level of my development. The book speaks to each reader at the personal level. I must not try to tell you what I think it is about, because by doing so, I might put a veil between you and its message. In these pages, you will experience Swamiji's presence and the presence of other great masters. May you bask in their grace and receive what just what you need. Nice. Let's start. Chapter number or section number 1, spiritual education in the Himalayas. Childhood is the foundation stone upon which stands the whole life structure. The seed sown in the childhood blossoms into the tree of life. The education which is imparted in childhood is more important than the education which is received in colleges and universities. In the process of human growth, proper guidance along with environmental learning is important. The proper in the process of human growth, proper guidance or proper knowledge or guidance along with environmental learning is important. Now, many people who actually come to me and tell me that our child is addicted and can you do a healing and so and so and so. My almost my first question to them is, what is the environment of the child? Is the child in the environment where he sees these things happening every day? Is it मतलब जो बच्चा जो है वो उस एनवायरनमेंट में है जो कि रोज उसको एडिक्शन देखने के लिए मिलता है, उसके दोस्त इस तरीके के हैं, या उसके पापा करते हैं, या उसके मतलब जिन दोस्तों के साथ वो जाता है वो उस तरह की चीजें करते हैं। अगर ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा, अगर मैं अच्छे से साफ भी कर दूंगा, क्लीन भी मतलब हील भी कर दूंगा, तो दोबारा आने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एनवायरनमेंट ही वैसा, एनवायरनमेंट का मतलब कीचड़ है वो। आप उसे निकाल के बाहर से साफ भी कर दोगे वो दोबारा उसमें चला जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आसपास कोई इंस्पायरिंग फिगर हो, बहुत स्ट्रांग वाला इंस्पायरिंग फिगर हो, इस तरीके का कि जो आपको लिटरली इंस्पायर कर सके कि हाउ टू रियली बी अ मच मोर ब्यूटीफुल पर्सन इन लाइफ। आप उसको देखो, आप उसको इंस्पायर हो क्योंकि आपको उसके जैसा बनने का है, उसके साथ बनने का मन है, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसे लोग आसपास लाइफ में नहीं होंगे तो लाइफ मतलब इट्स लाइक एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर आपने खाली दिमाग शैतान का घर, राइट। अगर आप नहीं समझ पाए कि आपकी लाइफ में सही लोगों का होना बहुत जरूरी है आसपास, कि आपकी लाइफ वैसे ही बन जाएगी जैसे आपके आसपास लोग होते हैं। एम आई राइट? अगर आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं आसपास तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी बन जाएगी, ब्यूटीफुल, यू विल ब्लूम लाइक अ फ्लावर, गुड पीपल अराउंड यू। बट अगर आपकी लाइफ के आसपास लोग जो है वो इमोशनली मैनिपुलेटिव हैं, झूठ बोलने वाले हैं, लायर्स, लेजी पीपल, प्रोक्रास्टिनेटिंग पीपल, आप भी वैसे बन जाओगे क्योंकि वही आप देखते हो और आपको नॉर्मल लगता है, यू थिंक इट्स नॉर्मल देन। गाली देने वाले, पीपल लाइक दिस, राइट? अगेन, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द पीपल, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैड पीपल, आई एम सेइंग इट, यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट, यू डोंट वांट टू हैव दिस क्वालिटीज इनसाइड ऑफ यू, so why thinking of any of these things, right? Anyways, so let's take it one step further. I have seen people, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हुआ है जो कि who start at absolutely nowhere, super average to low society से आते हैं, मतलब छप्पर की रूफ वगैरह वाले घरों से आते हैं, बट दे गेट राइट मेंटर्स इन द लाइफ। बिजनेस मेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी, एंड बिजनेस मेंटर अच्छे अच्छे जब उनको मिलते हैं, दे रियली स्टार्ट टू क्लाइंब बिकॉज ये लोग सीखना चाहते हैं, एंड मेंटर्स जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, दे रियली टेक ऑफ। स्पिरिचुअल मेंटरशिप का एग्जांपल जो अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन में, वो वही था, जो जिन्होंने वो लिखा है उनका नोट, वो एक नॉर्मल इंसान थे, बट स्पिरिचुअल मेंटरशिप में स्वामी रामा की ही टुक ऑफ। Many of us who actually were living lives aimlessly, when जब हम लोग प्राणिक स्कूल में आए तो
मास्टर शोभा की जो टीचिंग्स हैं, दे एक्टेड लाइक मेंटरशिप and we took off from there. The life had a purpose after that, right? So uh, एक आई थिंक एक बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, वो ये बोलते हैं कि आपकी लाइफ के जो 5 सबसे ज्यादा करीब दोस्त आप जिनसे मिलते हैं, 5 क्लोजेस्ट पीपल ऑफ योर लाइफ, और 5 पीपल दैट यू स्पेंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम विद, वो डिफाइन करते हैं कि आप किस तरीके के हैं, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। विच मीन्स दे क्लेम टू से कि आपके 5 सबसे ज्यादा जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, अगर मैं उनसे मिल लूंगा तो मैं जान लूंगा कि आप कैसे हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं वो आर नॉट प्रॉस्पेरस, तो यू आर नॉट प्रॉस्पेरस, कॉमन सेंस। 5 people not prosperous, likewise you're not prosperous. 5 people are non-creative, you're most likely non-creative. 5 people are gossipers, you're probably a gossiper also. But if your 5 people are enthusiastic about new technology, you're also most likely. Birds of same feather flock together, right? 5 people. Choose your 5 people very, very wisely. If the 5 people are meditators, you're also a meditator, most likely. If 5 people are enthusiastic to read about spiritual books, आपका भी वही हिसाब होगा. Clear as that, right? So choose your 5 people wisely. In fact, एक मेरे एक थोड़े इंस्पायरिंग मेंटर हैं प्राणिक सर्कल में, उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने 5 जो मेरे जो व्यक्ति हैं उनको बहुत ध्यान से चूज करता हूं. आई डोंट चूज देम रैंडमली. I choose my 5 people for a year depending upon what I want to build in myself. And I'm like, that is smart. That is really smart. वो अपने 5 व्यक्ति चूज इस तरीके से करते हैं कि इस साल में अगर उनको फाइनेंस की स्किल बिल्ड करनी है या फाइनेंस की नॉलेज अगर बिल्ड करें, तो वो अपने 5 व्यक्ति इस हिसाब से चूज करेंगे. That is really smart, actually. You custom choose from a buffet of people, 5 people that you want to build a skill. And I really admired him for his practicalness. That is really living your life in the most practical manner. Wow, that's admirable to the next level, actually. For example, if you want to be a really good healer, spend time with 5 really good healers, for example. At least surround yourself with good healers. You will become a good healer. You want to be a good, a person who respects women a lot. Surround yourself with people who respect women and relationships. You'll become like that. Simple. It rubs off. Very simple. Yeah. Anyway, let's go ahead. The sacred Himalayas. The Himalayan ranges extend over almost 1,500 miles in length. Mount Everest, towering up over 29,000 feet on the border of Nepal and Tibet, is the highest of all the mountains in the world. Persians, Indians, Tibetans, and Chinese have all written about the grandeur and the beauty of these mountains. The word Himalaya comes from Sanskrit word Hima, means snow, and Alaya means home, the home of the snows. I would like to make you aware that the Himalayas are not merely home of snow, but that they have also been a stronghold of yogic wisdom and spirituality for millions of people, regardless of their religious beliefs. This ancient and rich tradition still exists there today, as these unique mountains continue to whisper their spiritual glory to all who have an ear to hear. I was born and brought up in the valleys of the Himalayas. I roamed among them for more than 4.5 decades. Wow, my God, 45 years is a lot of time to spend there. And was educated by their sages. I met the masters who live and travel there, studied at their feet, and experienced their spiritual wisdom. From the Punjab Himalayas to the Kumayu and Garhwal Himalayas, from Nepal to Assam, from Sikkim to Bhutan and Tibet, I traveled to those forbidden places
which are virtually inaccessible to tourists. I climbed to a height of 19,000 to 20,000 feet without the help of an oxygen kit or modern equipment. Many times I did not have food and became unconscious, tired, and sometimes wounded. But always, one way or another, I found help during such occasions. मतलब वो बहुत ऊपर ऊपर तक गए हैं, वो ऑलमोस्ट मतलब काफी उन्होंने हिमालय वगैरह ट्रैवल किया है, अलग अलग इनएक्सेसिबल जगहों पे गए हैं, फॉरबिडन जगहों पे गए हुए हैं। और जो है बहुत बार उनके पास खाना भी नहीं होता था, ऑक्सीजन किट तो था ही नहीं उनके पास, बहुत बार उनको बेहोश हो गए, थक गए, चोट लग गई, बट हमेशा कोई ना कोई हेल्प उनको मिल गई थी रास्ते में। फॉर मी द हिमालयाज आर माई स्पिरिचुअल पेरेंट्स, and living there was like living in the lap of a mother. She brought me up in her natural environment and inspired me to live a particular style of life. Once, when I was 14 years old, an unknown sage blessed me and gave me a leaf of Bhojapatra, the paper made of bark on which the ancient scriptures were written. On it, he inscribed, "Let the world be with you, let you be on the path of spirituality." It is still in my possession. So Bhojapatra, it's a paper. I think it's a paper made of bark on which the ancient scriptures were written. Okay. मोले मेरा आशीर्वाद मुख मोड़ जग से, सॉरी, मेरा आशीष मुख मोड़ जग से हो अग्रसर अध्यात्म पथ पर, अवधूत गंगोत्री शास्त्री or something like that. Let the world be little with you, mukh mod jag se. Let you be on the path of spirituality. Ho agrasar adhyatma path par. Avadut. Avadut Gangotri, 1939. Sorry, 1939. Wow. These guys are far ahead at that time. Yeah? The love I receive from the sages is like the perennial snows from which silver glaciers of the Himalayas and then melt into thousands of streams. When love became the lord of my life, I became quite fearless and traveled from one cave to another. See, this is important. See, when love became the lord of my life, I became quite fearless and traveled from one cave to another. तो क्या होता है ना कि जब कभी भी आपके जो चक्रास होते हैं उनमें अलग अलग तरह की एनर्जी हार्बर्ड होती है, अलग अलग तरह की एनर्जी। अगर आपके चक्रास में सपोज जो एनर्जी हार्बर्ड है वो हेट, मतलब हेट की है या फियर की है या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की है, तो आपको फियरलेसनेस नेचुरल नहीं होगा, आपको सिचुएशन आके डरा जाएंगे एक्चुअली, और बार बार आप दूसरों से सेफ्टी की उम्मीद करोगे। पर जब आपका हार्ट चक्र प्रॉपरली खुल जाता है, ढंग से खुल जाता है, तो आपके अंदर डर नहीं रहता, फियरलेसनेस बहुत नेचुरल हो जाता है, एक्चुअली आपके लिए बहुत नेचुरल हो जाता है। फिर आपको डर नहीं लगता चीज़ों से, क्योंकि लव का फ्लो इतना स्ट्रांग है हार्ट से, और लव एक एनर्जी होती है, उसका फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है, और वो अलग अलग तरह के मेडिटेशन करने से लव का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके हार्ट चक्र से। अगर आपको ये और जानना हो तो एक स्पेसिफिक मेडिटेशन होती है जो कि प्राणिक सर्कल में सिखाते हैं, उसका नाम होता है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। जब वो रेगुलरली करेंगे तो फिर आपका हार्ट चक्र एक बहुत पावरफुल तरीके से खुलना शुरू हो जाएगा। When love became lord of my life, I became quite fearless and traveled from one cave to another, crossing streams and mountains, passes surrounded by snow-blanketed peaks. In all conditions, I was cheerful, searching for hidden sages who preferred to remain unknown. Every breath of my life was enriched with spiritual experiences which may be difficult for many others to comprehend. That gentle and amiable sage of Himalayas had only one entrancing theme: love for nature, love for creatures,
and love for the whole. देखिए ये जो लव वाला जो है ना, इसको बोलते हैं क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या बुद्धिक कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं। लव फॉर एवरीवन, लव फॉर द वर्ल्ड, लव फॉर क्रिएचर्स। ये तब हो पाता है जबकि आपका जो क्राउन चक्रा जो है, जिसको बोलते हैं सहस्त्र चक्रा, या जिसको सिखिज्म में बोलते हैं दसम द्वार, जब वो प्रॉपरली खुल चुका हो, तब वो कॉन्शियसनेस आपके सिस्टम में, आपके ब्रेन में रजिस्टर करके प्रॉपरली काम कर सकती है। तब उतना अमाउंट ऑफ लव जो है हर एक के लिए सिर्फ तब पॉसिबल हो पाता है, इतना सॉलिड लव कि आपका कॉन्शियसनेस उनके साथ वन हो जाए प्रॉपरली। देयर इज कंप्लीट वननेस in the so called two people। इसलिए स्वामी सॉरी महर्षि रमन्ना से जब किसी ने पूछा था, ग्रेट ग्रेट ऋषि रमन्ना, जब उन्होंने पूछा था किसी ने कि हाउ डू वी treat other people when we are angry or they're angry or whatever, and he said there are no others, there are no others। Four words that show the profoundness of wisdom। Wow, just wow। देखिए ये चार वर्ड्स जो है, देर आर नो अदर्स, अगर आप सिर्फ इसको एज अ मोटिव बना लो कि हाउ विल आई रियलाइज दिस इन द लाइफ, योर लाइफ विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। योर पाथ, आपकी जो 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 लाइफ होगी, दैट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स बुद्धिक कॉन्शियसनेस। इतना पावरफुल स्टेटमेंट एक्चुअली है, देर आर नो अदर्स। आगे चलते हैं। लव फॉर द होल। The Himalayan sages taught me the gospel of nature. Then I started listening to the music coming from the blossoming flowers, from the songs of the birds, and even from the smallest blade of grass and thorn of the bush. In everything lives the evidence of the beautiful. If one does not learn to listen to the music of nature and appreciate her beauty, then that which impels man to seek love at its fountain may be lost in the remotest antiquity. Do you need psychological analysis to discover in nature the source of so much happiness, of so many songs, dreams, and beauties? This gospel of nature speaks its parables from the glacial streams and valleys laden with lilies, the forests covered with flowers, and the light of stars. This gospel reveals that emphatic knowledge through which one learns truth and beholds the good in all its majesty and glory. Wow. When one learns to hear the music of nature and appreciate her beauty, then his soul moves in harmony with its entire environment. His every movement and every sound will surely then find its due place in the human society. The mind of man should be trained to love nature before he looks through the corridor of his life. See, it's so powerful, no? The mind of man should be trained to love nature before he looks through the corridor of his life। इसके पहले कि आप अपनी लाइफ को ज्यादा ढंग से या ज्यादा क्लोजली परखना शुरू करो, या आप अपने आप को अपनी लाइफ से डिफाइन करो, आप यू नीड टू कम इन टू फॉलोइंग इन डीप लव विद नेचर। नेचर ने आपको सब कुछ दिया, अगर आप उसी से प्यार नहीं कर पाए, अपनी माँ से प्यार नहीं कर पाए, तो क्या मतलब रहा। इनफैक्ट ऑनेस्टली इसीलिए हम मेडिटेशन, जो प्राणिक हीलिंग में हम जो मेडिटेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन, उसके बाद हम नेचर को ब्लेस करते हैं, मदर नेचर को ढंग से ब्लेस करते हैं एक्चुअली, कि मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड एयर, गुड वाटर एंड गुड अर्थ। हम अपने हिसाब से जितनी एनर्जी दे पाते हैं वो हम देते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि बहुत पावरफुल प्रेयर्स करते हैं अलग अलग रिलीजन्स में, और एक्सेस एनर्जी को पूरी अर्थ में डाल देते हैं। वो भी अच्छा तरीका है अर्थ को थैंक यू बोलने का। तो लोग अपने अपने हिसाब से कोशिश तो करते ही हैं। वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली।
Then a revelation comes peeping through with the dawn. The pain and the miseries of life disappear with the darkness and the mist when the sun rises. ये जो सन राइजेस जो दिया है यहाँ पे, इसका मतलब है द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये होता है द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल। जब ब्रेन में जब एक बार वो राइज हो जाएगी, देन यू विल नो द रियल वेयर एवर यू वर प्रोग्रेसिंग। मॉर्टलिटी finds its way in the awareness of immortality. इमोर्टलिटी का मतलब पता है क्या होता है? इमोर्टलिटी का मतलब ये होता है कि आपको पता है आप अमर हो। ये नहीं कि आपकी बॉडी अमर है, आप अमर हो। उसको बोलते हैं ट्रू इमोर्टल। योगीज जिनको हम इमोर्टल बोलते हैं, उनकी बॉडी आती आती रहती है, बट वो मरते नहीं हैं। उनकी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली अनब्रोकन होती है, कंप्लीटली अनब्रोकन होती है। मतलब वो जब चाहे कोई भी बॉडी क्रिएट कर लें, वहां जाके बर्थ ले लें, क्योंकि वो दे आर, जो ब्रिज होता है, ब्रिज ऑफ रेनबो ब्रिज, वो ब्रेन से लेके सोल तक का वो कंप्लीटली बिल्ड हो चुका होता है, कंप्लीटली फुल्ली फॉर्म्ड ब्रिज एक्चुअली। तो आप वहां रहते हैं और यहाँ पे बस काम करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि मैं गाड़ी चलाता हूँ पर मैं गाड़ी नहीं हूँ। उनको पता होता है ऑब्वियसली उस समय तक। एंड आज ये वाली गाड़ी चलो 10 साल तक काम हो गया, लेट्स गो टू द न्यू गाड़ी नाउ। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में देर कंप्लीटली इमॉर्टल। उनको सारे के सारे जन्म भी याद रहते हैं, दैट इज ट्रू। सारे के सारे जन्म याद रहते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ। सब कुछ याद रहता है। So mortality finds in its way the awareness of immortality. Then a mortal being suffers no more from the pangs and sorrows which death seems to shower upon him. Death has for ages been a constant source of misery. But at death, man learns to become one with the infinite and the eternal. When one learns to appreciate fully the profundity of nature in its simplicity, then thoughts flow spontaneously in response to the appeals of his delicate senses. When they come in contact with nature, this soul vibrating experience, in its full harmony with the perfect orchestra of melodies and echoes, reflects from the sound of the ripples of the Ganges, the gushing of the winds, the rustling of the leaves, and the roar of the thundering clouds. The light of the self, देखो self का मतलब है soul. The light of the self is revealed and all the obstacles are removed. He ascends the top of the mountain where he perceives the vast horizon. ठीक है, टॉप ऑफ द माउंटेन का मतलब होता है एक स्पिरिचुअल अटेनमेंट है जिसको बोलते हैं हमसा, थर्ड इनिशिएशन, टॉप ऑफ द माउंटेन। इसका जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस जो है टॉप ऑफ द माउंटेन का, वो जीसस की लाइफ में दिया हुआ था। उसको बोलते हैं माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, या जिसको बोलते हैं द माउंट ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ज़ोडिएक होता है उसमें वो भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक माउंटेन टॉप को। वहां जाके आपको अपने सचमुच में आप क्या हो उसका क्लियर पिक्चर मिलता है पहली बार। पहली बार आपको दिखता है कि आपको आखिर में ये दिखता है कि आप कितने जायंट साइज के बीइंग हो, कितने पावरफुल बीइंग हो आप एक्चुअली में। उस टाइम पे आपको ये मालूम होता है कि एक्चुअली में गॉड से वननेस जो होती है वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती है और कितनी ग्रैंड होती है एक्चुअली। और आगे का जो पाथ है जर्नी का, वो कितना मेजेस्टिक पाथ है एक्चुअली। ये आपको पहली बार दिख जाता है वो माउंटेन टॉप पे जाके। इसको माउंटेन टॉप बोलते हैं, उसको बोलते हैं माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। वो एक हमसा या थर्ड इनिशिएशन से लिंक्ड है एक्चुअली। इसलिए थर्ड इनिशिएशन जो है वो स्पिरिचुअल ब्रदर्स, जिनको बोलते हैं हायरार्की ऑफ ब्रदर्स, उनके हिसाब से सबसे मेजर इनिशिएशन ये वाला होता है, थर्ड इनिशिएशन एक्चुअली। तो yeah, one when learns to appreciate fully the profundity of nature in its simplicity, then thoughts flow spontaneously in response to the appeal of his delicate senses when they come in contact with nature. This soul vibrating experience in its full harmony
with the perfect orchestra of melodies and echoes reflects from the sound of ripples of Ganges, the gushes of winds, the rustling of leaves, and the roar of thundering clouds. The light of the self is revealed and all the obstacles are removed. He ascends the top of the mountain where he perceives a vast horizon. In the depth of silence is hidden the source of love. Remember silence, right? And the word which is used, उसको बोलते हैं the sound of silence, yeah, the whisper of the soul. The eye of faith alone can unveil and see the illumination of that love. This music resounds in my ears and has become the song of my life. Now, let me explain this also. Um, maybe not right now, maybe some other time. I think it's a very important thing. The eye of faith alone can unveil and see the illumination of that love. I'll give you a hint, by the way. Faith is connected to a particular chakra, the eye of faith. Powerful, very powerful. So this is all general text for a normal person, but it means something else if you know the scripture, if you know about the chakra or the underlying energy. This discovery of the sages binds the whole of humanity in the harmony of the cosmos. Sages are the sources from which mankind receives knowledge and wisdom to behold the light, truth, and beauty, which shows the path of freedom and happiness to all. They make humanity aware of the mere shadows and vain illusions of this world. With their eyes, the unity of the entire universe is best seen. See, with their eyes, the unity of the entire world is best seen. Wow. क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को इतना डेवलप किया है कि दे कैन सी वननेस एवरीवेयर, तो उन्हीं की आंखों से यूनिटी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स कैन बी सीन. The truth is hidden by a golden disk. O Lord, help us in unveiling so we can see the truth. The gospel of love as taught by the Himalayan sages make the whole universe aware of the fountainhead of light, life, and beauty. For example, the truth is hidden by a golden disk. इसके अलग-अलग interpretations होते हैं, of course. अलग-अलग interpretations होते हैं. पहला interpretation जो होता है वो है आपका sun. First interpretation. Sun जो है, it's a golden disk, obviously, right? Obviously का मतलब the way we see it. But the problem with the sun का factor is कि there is a real spiritual sun which is hidden to a normal person, which is revealed to the person whose consciousness is that of the soul, hidden in plain sight practically. Second is when you do advanced meditation of जिसको हम आराधक सर्कल में बोलते हैं द ब्लू पोल मेडिटेशन, उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड एज a golden flame or a golden disc that you imagine. Remember? When you meditate on that long enough, उसके बाद जाके गेटवे डोरवे रिवील होता है आपको. That doorway is the step up or the pedestal to launch you to higher consciousness. So वो जो गोल्डन जो डिस्क है अंदर की और बाहर की, inside and outside both, there are two representative examples of what this line actually means. The golden disc that conceals or hides the truth. So you say, oh Lord, help us in unveiling so we can see the truth. At a young age, I sat at the foot of Mount Kailash and drank the glacial waters of Lake Mansarovar. Often I cooked the vegetables and roots grown by Mother Nature at Gangotri and Kedarnath. Living in the Himalayan caves was very pleasant. And when I was there, I was in the habit of roaming through the mountains
during the day, taking notes in a haphazard manner, and returning to my cave before darkness would fall. My diary is filled with descriptions of my experiences with sages, yogis, and other spiritual leaders of the Himalayas, the temple at Kedarnath. This is a land where Sandhya Bhasha was born. Several modern scholars have tried to interpret and translate Sandhya Bhasha by calling it the twilight language. Sandhya, evening, a twilight, Bhasha is language. Actually, the way I was taught this language is entirely different from the concept of the modern writers have of it. It's a purely yogic language spoken by only few fortunate yogis, sages, and adepts. Philosophically and ideally, it is very similar to Sanskrit. For every word of Sandhya Bhasha flows full of meaning from its root sound. Sandhya Bhasha can be used only for the discussion of spiritual matters and contains no vocabulary for the business affairs of the world. When the sun weds with the moon, when the day weds with the night, which means twilight probably, when the Ida and the Pingala, the left and the right energy channels of the human body equally flow, that union is called Sandhya or Sushumna. Sushumna is the mother from whose womb was born the language Sandhya Bhasha or twilight language. During that period of Sushumna, the yogi derives the greatest joy that anyone can consciously experience. When such a yogi speaks with other adepts, then they converse in this language, which is hard for others to understand. Knowledge of the appropriate way of chanting the Vedic verses is slowly diminishing because the grammar of Vedas is different from the Sanskrit language. The grammar of the Vedas is called Nirukta. Similarly, the grammar of the Sandhya Bhasha is completely based on sounds and is diminishing. As the musicians of the classical music can make notes from sounds and their pitches, so the notes can be made from the sounds used in Sandhya Bhasha. It is called the language of devas, the gods. Now, let me explain something to you. आज का सेशन हम इसके बाद बंद कर देंगे, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली नो. क्या होता है कि संध्या भाषा जो होती है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है अभी, कुछ इस तरह की लैंग्वेज होती है जिसमें कि नॉर्मल जो का जो नॉर्मल लैंग्वेज थी बिल्कुल वैसी लैंग्वेज होती होगी, बट उन सिलेबल्स का यूज करके एक इस तरह का वर्ड्स क्राफ्ट किए जाते हैं जो कि सिर्फ बोले ना जाएं, बट कि उसमें पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी, सोल कम्युनिकेट करे उन वर्ड से. मतलब यह है कि हर सिलेबल जो होता है उसका फिजिकल लेवल पे एक इम्पैक्ट होता है, इमोशनल लेवल पे एक इम्पैक्ट होता है, मेंटल लेवल पे एक इम्पैक्ट होता है, स्पिरिचुअल लेवल पे एक इम्पैक्ट होता है, और उसके भी जो ऊपर लेवल है उन पे इम्पैक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो जब आप हर लेवल पे अवेयर रह के, इसलिए सुषुम्ना की बात उन्होंने की उसमें, जब हर लेवल पे जब आप अवेयर रह के जब आप शब्दों को बोलते हो, जिसको कि काबलिस्टिक लैंग्वेज भी बोला जाता है, काबला की हमें काबलिस्टिक लैंग्वेज होती है वो, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मैजिक, इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ देवास ऑल्सो. जब आप फुल कॉन्शियसनेस में जब वर्ड्स का प्रयोग करते हो, तो आप सिर्फ अपनी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचाते हो, आप चीजें क्रिएट कर रहे होते हो उस टाइम पे. वो होती है लैंग्वेज ऑफ मैजिक. इसलिए जब आप पढ़ोगे प्रैक्टिस ऑफ मैजिकल एवोकेशन, या जब आप पढ़ोगे द की टू द ट्रू कबाला, जो कि फ्रांस बार्डोन की जो बुक है, उन्होंने बोला कि साधारण आदमी इन इन मंत्र को पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा. Nothing will happen if a normal person will read these things. Nothing will happen, absolutely. Only if you speak these things quadrupolarly or tetrapolarly, or what is called kabbalistically, is when anything will happen actually. Which means he's saying कि इन मंत्रस को रीड दी, इन मंत्रस को पढ़ो वर्बली, यानी कि फिजिकली, एस्ट्रली, मेंटली,
from the soul and from the spirit at the same time, that's when anything will happen. He's basically saying you need to be a third initiate or a higher symbolically to be able to perform this kind of a stunt. By that time, spiritually far more matured, obviously. But quadrupolarly, इसलिए दे इन्होंने बोला सुषुम्ना के बारे में. It is said very clearly in the yogic literature that once the Kundalini rises through the Sushumna Nadi, the yogi becomes dead for the world, zero interest in the world, because the gate with the doorway permanently opens up. So the only, and by the way, the only thing which most yogis in the world are trying their best to do is to awaken the Kundalini through Sushumna channel. That's it. That's the only thing which they're trying to do. That is the only thing which anyone in the world is trying to do who's practicing any real form of yoga. Real form of yoga. Make sense? If you talk of arhatic yoga, which we practice, जो कि हमको हमारे गुरु ने सिखाया है, उसका भी same ही purpose है actually. It's sort of the modern sense, but it's precisely and only that. Now the best part of this, here's the interesting bit. कुंडलिनी जो होती है उसकी वो अलग अलग लेयर्स में अवेकन होती है, डिफरेंट लेयर्स, राइट. आई विल टेक 2 more minutes, उसके बाद बिल्कुल क्लोज सेशन. जितनी ज्यादा आपकी लेयर्स अवेकन होगी कुंडलिनी की, एक तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वेरी लॉट ऑफ एफर्ट हैज टू बी पुट इन दैट. मोर इम्पोर्टेंटली, once awakened you will have mastered different levels of consciousness, and you will have mastered different levels of siddhis. Same siddhi at this level and that level will be completely different. Same power and this level, that level is very, very different. So you will have mastered these things when the Kundalini will rise in Sushumna. जितनी ज्यादा वहां राइज होगी, आप उतना इस वर्ल्ड के लिए डेड होते जाओगे. एक्चुअली डेड का मतलब नॉट डेड एज इन डेड, बट लाइक जीरो इंटरेस्ट, बिकॉज यू वुड हैव सीन द ट्रूथ, द ब्यूटी एंड द वे. Like Lord Jesus said, I am the truth, I am the truth, I am the way, and I am the light, the way, and the truth, or something like that, right? You will have seen these 3 things. तो आपको वो सब दिख जाएगा कि आप एक्चुअली में क्या हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में. उसके बाद से कैरेक्टर बिल्डिंग बिकम्स रियली इजी बिकॉज यू कैन सी द ट्रूथ नाउ. उसके बाद से जो एक चीज जो टाइम लेके जाने में वो होती है प्राइड. वो हम सब जानते हैं, प्राइड टाइम लेके जाने में, बट अदरवाइज मोस्ट थिंग्स, इंजरी बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंट. एक बार आपको बुद्धि कॉन्शियसनेस का you see that once, glimpse of it once, you will know that you're actually one with everyone. फिर आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप किसी को you cannot do anything which will hurt the person in the front or a being in the front. आपको फुल रियलाइजेशन में हो कि सामने वाले का कुछ भी कटा तो फिर मेरा कट रहा है हाथ. It with that level of oneness. Next book we'll read next Saturday 10 a.m. to 11 a.m. Yeah, open link है, सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है. Let's do the closing prayer. Supreme God, Divine Father, Divine Mother, thank you again for your great blessings. Thank you to our spiritual teacher, to all the spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great ones. We very, very humbly thank you for your great blessings. Thank you so much. Thank you. इसकी रिकॉर्डिंग मैं YouTube पे डाल दूंगा, so I think it will be open for everyone. ठीक है, take care, bye, have fun.